I would Shall we start, love, ma'am? yeah, please. The sparkle of fire is the witness of your worth. The silent frown of the water is the witness of your softness. Good evening to all dignitaries and guests. I, Simrandeep, Joint Secretary of Nishtha, the Civil Services Society of Hansraj College, would like to extend to you a very warm welcome on behalf of Nishtha Society to our first flagship event for the session 2021-22, Uddeshya, which, as the name suggests, deliberate on bringing inspiration in your lives by making you realize your own purpose. Nishtha is an innovative and distinctive society of Hansraj College that visualizes a panoptic and multidisciplinary approach with an aim to provide a platform for fervent aspirants of the civil services examination to focalize and develop integrally. It gives me immense pleasure to welcome you all on the second day of Uddeshya, a third day illuminative session where we will be bringing to you the most noteworthy and prominent names from this field of civil services. It takes a vision and courage to create. It takes faith and courage to prove. Our guest speaker for today, IAS Isha Duhan Ma'am, is the best ideal for this saying. She has set her heart onto becoming a civil servant right from her 7th grade, and she accomplished her very dream by badging All India Rank 59 in UPSC Civil Services Exams 2014. She did her schooling from Sacred Heart Senior Secondary School, Chandigarh. Ma'am is also a biotechnologist, graduated from the Thapar University. Her journey from biotechnology to bureaucracy is certainly very inspiring for all the young budding civil servants. It is our immense honor and privilege to have you here with us, ma'am. Thank you so much for accepting our invitation. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. And I would like to thank Nishtha, the Civil Services Society of Hansraj Kohli, University of Delhi, to sort of organize this event. And I believe you do it every year. So this year you've named it as Uddeshya. It's very aptly named. And thank you so much. I am so sorry again for being a little late. I got stuck in a World Bank meeting. And to whoever who is aspiring to be a civil servant, you have to forego all your personal time. You have to, I mean, you have to be on the job 24/7. But this is one thing that I enjoy. So I think, that is one thing that you should know, that it's not, sometimes people feel ki clearing the exam is the toughest part. Clearing the exam is not the toughest part. Believe me. After, proving yourself every day, that is the toughest part. Thank you so much for inviting me. And can I start? I can, Yes, directly yes, start, or, please, ma'am. how is the structure going to be? Ma'am, you're gonna tell us about your journey, and we will Okay, be, okay. in the end part, we'll be asking you some Okay, questions. so the basically the topic that they have given me is cracking the UPSC, my UPSC journey. As Simran already mentioned, although with a little bit correction, I basically started thinking about going into civil services from my 8th standard. And that was the first time I actually thought about it, but not very seriously. I seriously started, I'm giving a little background so that all the people who are aspiring just get to know that what exactly we are going to talk about. So basically, I started preparing seriously, although I always wanted to go into civil services, but I wanted a professional degree. So I opted for non-medical, and I was studying BTech biotechnology in Thapar University, Patiala. And that is when I decided that I'll start my preparation. So during my last year of college, in my 7th sem, I started preparing. So in Patiala, not much culture of civil services preparation was there, and this is for all the students who might be from smaller places, or who might be belonging to places where should I keep it bilingual, or English is okay with everybody? Yes, ma'am, bilingual will work. Okay. तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ उतना कल्चर नहीं है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का. सो पटियाला देयर वाज, आई थिंक देयर वाज ओनली वन गुड टीचर, एंड ही यूज्ड टू टेक क्लासेस एट, all the college students would definitely relate to this. He used to take classes at 5 in the morning. So 5 in the morning, that means 4:30 a.m. you wake up,
And and especially in the winters, it was very tough. So 5 a.m. we used to go to the classes, and Thapar starts at 8 a.m. The college starts at 8 a.m. and the attendance is 75%. So it was pretty tough. I did the coaching for a few months, and then somehow I was not able to cope up with it. So I thought I'll just complete my college and then prepare in Delhi. So again, firstly, the decision of coaching is a very personal decision. I'm talking about it side by side so that everybody is able to understand. It's a very personal decision. Ultimately, what I realized during my journey is that self-study is the one thing that is very important. That is the most important. No amount of coaching, no amount of anything is going to help you if you're not self-studying and if you're not very, very clear about the goal. Also, this is one thing that is going to stay with you, because starting with a civil services preparation, you don't know whether you will be clearing the exam in first attempt or second attempt. So you have to be very resilient with yourself, and you have to be sort of, you have to be that motivated. And so self-study is something which is very important. Coaching, you can take, you cannot take, it's just a direction. I'll talk about it later in detail when I'm, in the later part of it. So I went to Rajendra Nagar in Delhi, and I joined coaching. When I started preparing, the pattern was different. There were 2 optional papers. Now there is only 1 optional paper in the exam. And so there were 2 optional papers. I started with my optional preparation first, and then I started with GS preparation. By the time my GS preparation was half done, the pattern changed, completely changed. Mains examination ethics was introduced. There were 3 papers, a lot of new things, world history, there's that, a lot of new things were introduced, and it was a new pattern for everybody. So one thing that we have to understand when we start preparing for the civil services examination is that, firstly, you have to be aware about the syllabus. Any aspirant who starts preparing, firstly, you take a printout of the syllabus, go through it. What is the syllabus for GS, for prelims, for mains, for interview? What is the syllabus? And then you go through, and same thing would apply in deciding your optional. I would again, talking about the optional, I would say that decide a subject which you are more comfortable with, because you have to study that subject, and you have to sort of answer in the subject, and you will be having an edge only when you know what the subject is. ऐसा ऑप्शनल आप चुनिए जिसमें आप इतना आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये मैं इसमें मतलब अच्छा कर पाऊंगा, मैं आई एम द बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, बेस्ट और अमंग्स द बेस्ट. सो पीपल जब लोग बात करते हैं कि क्या ऑप्शनल चूज करें, तो नॉर्मली लोग क्या देखते हैं कि मेरे फ्रेंड्स क्या चूज कर रहे हैं, या पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या चूज करो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस ऑप्शनल में नंबर ज्यादा आते हैं, या ये छोटा है तो ये जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा. ये जो अप्रोच है ये थोड़ा सा गलत इसलिए है क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं है. 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2, और दोनों आपको आंसर करने पड़ेंगे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. सेकेंडली, जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल नहीं हो, सपोज कोई भी आपने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया सिर्फ इसलिए कि वो छोटा है, उसमें नंबर अच्छे आते हैं, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है वो सब्जेक्ट, तो जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो या उसमें कितने ही अच्छे नंबर आओ, आपके नंबर नहीं आएंगे अच्छे if you are not comfortable with it. So you choose a subject which you are comfortable with. हो सकता है आपका कुछ बैकग्राउंड हो सब्जेक्ट में, कुछ स्टूडेंट्स ज्योग्राफी स्टूडेंट्स होते हैं, दे डू बीए इन ज्योग्राफी, तो वो ज्योग्राफी भी ले सकते हैं. व्हेन आई वेंट इनटू एकेडमी LBS, तो आई रियलाइज दैट what we had been hearing during our preparation कि इस सब्जेक्ट के लोग क्लियर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है. हर तरह के वहाँ पे सब्जेक्ट के एस्पिरेंट्स थे, ऑफिसर्स कह लो, आफ्टर रीचिंग द एकेडमी. सो हर तरह के सब्जेक्ट उन्होंने लिए हुए थे, लॉ, इकोनॉमिक्स, लाइक एवरी सब्जेक्ट यू कैन थिंक ऑफ. सो देयर इज नो सच सब्जेक्ट व्हिच यू कैन कॉल कि इट इज गुड स्कोरिंग और बैड स्कोरिंग. हाउ यू डिसाइड एन ऑप्शनल सब्जेक्ट? आप सिलेबस निकालिए, देखिए पेपर 1 का क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है, फॉर ऑल द सब्जेक्ट जस्ट गो थ्रू. जहाँ पे आपका थोड़ा इंटरेस्ट है, हो सकता है आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में शुरू से इंटरेस्ट हो. मेरा ज्योग्राफी में शुरू से इंटरेस्ट था. आई वाज हैविंग एन एज आल्सो, क्योंकि मुझे लोकेशंस और बाकी सब चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती थी. आई वाज इंटरेस्टेड इन ट्रैवल, मैंने अपने डाफ में भी ट्रैवल इंटरेस्ट में लिखा था. तो वो मुझे उसने मुझे एक फायदा किया. आई वाज गुड इन मैप्स एंड ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग, लोकेशंस. So that I had a genuine interest for the subject. So I decided कि मैं I will opt for geography because
आई एम इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट और अगर मुझे ये 1-2 साल पढ़ना भी पड़ा तो आई विल नॉट बी फीलिंग कि ये बर्डन है मेरे लिए। तो हमें ऐसा ही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कुछ लोगों का सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है, कुछ लोगों का साइकोलॉजी में रहता है, तो आप ऐसा, या कोई बैकग्राउंड है आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपके लिए ईजी हो जाएगा, यू हैव एन एज। तो इट्स अ कैलकुलेटेड सॉर्ट ऑफ डिसीजन कि आप उसमें आप किस सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट किस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आते हैं या कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है या कौन सा सब्जेक्ट छोटा है। इट्स अबाउट आप एज अ पर्सन आप किस सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। So I think that is one important decision you have to make when you start preparing for civil services. Many of you, as I'm told, have already started preparing. आपके subjects भी decided होंगे. जिनके नहीं decided है, you can think about it in this way and do see the syllabus of the subject. Always keep it in front of you. Now talking about the GS, how you start preparing. अब GS में जब आप, I'm keeping it very short and very quick because I was already late. So I know that everybody's time is limited. तो आपका जब आप पेपर के लिए पढ़ना शुरू करते हो, पहली चीज आप क्या नॉर्मली क्या है, दिल्ली में कौन सी कोचिंग अच्छी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल डू. नो, दैट इज नॉट द अप्रोच. कौन सी कोचिंग अच्छी है इज द लास्ट, आई थिंक लास्ट डिसीजन दैट यू शुड मेक आफ्टर चूजिंग एवरीथिंग. Your first thing that you should do is take out the syllabus of the exam. आप syllabus निकालिए, prelims, mains, interview तो खैर that's a different book. मतलब सब्जेक्ट आप syllabus निकालिए, आप syllabus देखिए कि ये हाँ ठीक है, these are the topics in the syllabus. ठीक है, this I'm comfortable. 2-3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो so that you are comfortable with what they are going to ask. Why they have taken out a syllabus is because they are going to ask from it. जब हम एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं कॉलेज में, स्कूल में भी, ऑलवेज लुक एट द सिलेबस कि इतने यूनिट्स आएंगे, तो हम उसके अनुसार तैयारी करते हैं. सो इसमें ऑल्दो आई नो दैट देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन स्टडी, बट दे डू हैव अ सिलेबस. कीप दैट इन माइंड बिकॉज इफ यू डोंट गो बैक टू इट अगेन एंड अगेन, यू आर गोइंग टू एंड अप स्टडिंग so much extra which you don't require. And why you don't require it? Because your time is limited. तो टाइम आपको अपना सेव भी करना है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आप सिलेबस पढ़ो डिटेल में. सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट 20 years आई वुड से कि क्वेश्चन पेपर्स आप गो थ्रू कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी. सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क. प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ना जब शुरू करते हैं, आई जस्ट गिव अ स्मॉल एग्जांपल कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैंने नहीं देखा था पहले सिलेबस. मैं why I am telling you, these are the mistakes I made and I feel that nobody should be making the same mistakes. It will save, आप कर लोगे इवेंचुअली, बट आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा वो रियलाइज करने में कि ये हमें करना था. सो मैंने जब देखा सिलेबस देखा तो आई रेड, हाँ हिस्ट्री है, मिडीवल हिस्ट्री है प्रीलिम्स में, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री. आई स्टार्टेड रीडिंग, पढ़ना शुरू किया. मिडीवल हिस्ट्री, यू नो, एवरीबडी नोज देयर आर सो मेनी किंग्स, सो मच दिस दैट, डेट्स, बैटल्स. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक ये कैसे याद होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है. मेन आपको याद हो जाता है बट बहुत निटी-ग्रिटी आपको नहीं याद हो पाती. देन आई थॉट आई विल जस्ट गो बैक टू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. सो आई वेंट बैक टू प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर्स एंड आई सॉ कि अरे मिडीवल का एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं या 2 ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. And that also they are sort of asking from art and culture part of it, या मुगल art है या paintings है या उस तरह से art and culture part of it. So I realized, मैंने 20 साल के देखे, मैं 20 साल में कभी भी डेट या बैटल नहीं पूछा. So then I realized कि मुझे medieval उस तरह से पढ़ना है कि मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, नॉट द डेट्स एंड नॉट द रूलर्स कि इसने उसको मारा या इसने इसको मारा. So the concept you have to understand. So why I'm telling you to go through 20 years question papers is that will give you an idea of what kind of questions are asked. So that when you study, you know that yes, this is the part that I have to focus more on and this is the part that I have to focus less on. This is not the same approach for modern history. Modern history, they will ask you dates. Modern history, they will ask you कि कब हुआ, civil disobedience कब हुआ, who are the main leaders. So those kinds of questions will be asked. So yes, the same amount of time that you are going to invest, it's all a time game. The same amount of time that you are going to invest in remembering the dates for the medieval history, you can focus that time and focus the energy on remembering the dates for the modern history. And for the medieval part, you can only go through the art and culture part of it. And ancient also, you would realize that what kind of questions they're asking. So this not only for history, this holds true for all the subjects. For economics, they will be asking more of conceptual questions.
So you just get an idea of what you have to focus on while you're studying. If you will do it before, बहुत लोगों ने तैयारी शुरू भी कर दी होगी, तो आप अभी भी आप go through कर सकते हो. You'll get an idea. Realize भी होगा कि अरे हम इस चीज पे focus कर रहे थे, but this is the thing that we are going to ask. तो I think एक ये important है, and regarding how you're going to start. Then talking about preparation again. As I told that I went to Rajendra Nagar and I started preparing. So your last decision is whether you're going to do self-study or whether you're going to take a coaching. That is your last decision. I suggest that you can go for either of the same. Both of them are equally good. Both of them are equally good. You just should know कि पढ़ना कहाँ से है. Because ultimately आपको self study करना है. आप coaching भी जाते हो तो आपको घर आके खुद ही पढ़ना है, आपको self study करना है. और कोचिंग ऐसा नहीं हो कि जहां जाके आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, कि जो आपको बुक से पढ़ सकते हो चीज वही, मतलब कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कोचिंग में तब आप ज्वाइन करिए. अदरवाइज अगर वही चीज जो आप बुक से घर पे पढ़ सकते हो, आई एम श्योर एवरीबडी इन हंसराज इज स्मार्ट इनफ, दे हैव सच अ शार्प ब्रेन कि वो खुद पढ़ सकते हैं. यू डोंट नीड टू गो टू सम कोचिंग एंड जस्ट जॉट डाउन की सिर्फ जॉट डाउन करके आ गए. वो चीज बुक से पढ़ लेना, आपको याद रखना जरूरी है. अल्टीमेटली when you go and you sit in the exam, nobody is going to ask you आप कौन सी कोचिंग गई, nobody is going to ask you आपने कितनी बुक्स पढ़ी, 1000 बुक्स पढ़ी या 100 बुक्स पढ़ी. You have to answer the question. If you are able to answer the question, चाहे आपने यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पे उस क्वेश्चन की तैयारी ना की हो सकता है आपने वो क्वेश्चन अपने 12th में पढ़ा हो या 11th में पढ़ा हो या 8th में पढ़ा हो. You should be able to answer that question. Nobody is asking you आपने कौन सी कोचिंग ली, कब तैयारी की. You should be able to answer that simple question. तो ये हमें ध्यान में रखना है. तो कोचिंग, वाई मैंने ज्वाइन किया था, आई ज्वाइन बिकॉज आई वांटेड अ रूटीन. एक रूटीन सेट हो जाता है कि आप मॉर्निंग उठते हो, आप जाते हो कोचिंग, फिर आप वापस आते हो. तो कई बार घर में आप अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर पाते हो, या यू बिकम टू रिलैक्स्ड विद योरसेल्फ कि ठीक है 1 घंटा बाद पढ़ लेंगे. तो वो वाला थोड़ा ब्रेक करने के लिए आई ज्वाइंड द कोचिंग. अगेन आपको कब ज्वाइन करना है, मॉर्निंग इवनिंग, दैट यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल. I won't say it is absolutely necessary. Self study is important. You should know कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. Now, how do we move forward to from where do you read and how much do you read? In UPSC preparation, there is no end to how much you can read. There is no end to what all you can study. You have to decide कि मुझे कितना absolutely necessary है पढ़ना. I sort of when I started preparing, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था. जब मैं राजेंद्र नगर गई तो आई सॉ कि अरे बहुत सारे सेकंड अटेम्प्टर्स और मतलब थर्ड अटेम्प्ट भी दिया रखा है, बहुत सारे सीनियर्स हैं उस वे में जो तैयारी कर रहे हैं और जो प्रिपेयर कर रहे हैं. आई हैड थॉट कि मैं इस क्रेजी एनवायरनमेंट में, मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन देयर, बट इट्स अ very difficult environment to survive in for a long time. So kudos to people who had been preparing for 2-3 years. Really, really takes a lot. But then अगर ultimately आपका aim clear करना है तो why not you clear it? Why not you focus all your energies into giving your best shot in the first attempt itself. I cleared in the first attempt. मैं बहुत young age में service में आ गई थी. I feel कि हमें we should give our first attempt as our last attempt. That is the only solution. अगर हम ये सोच के देंगे कि अरे कोई बात नहीं अगला attempt है तो तब improve कर लेंगे, तो फिर then it will take you more than one attempt to clear. So the more important thing is कि आप ये सोच के prepare करने जाएं कि this is my last attempt. How I am going to write the exam or how I am going to prepare if this is my last attempt. तो उस हिसाब से प्रिपरेशन शुरू करें. इफ यू नीड एनी कोचिंग सपोर्ट यू टेक इट. इफ यू डोंट नीड एनी कोचिंग सपोर्ट यू डोंट टेक इट. अपना स्टडी मटेरियल, अब सपोज आपका टाइम लिमिटेड है तो आप क्या करोगे, आप XYZ 1000 बुक्स तो आप पढ़ नहीं सकते, और अगर पढ़ भी लोगे तो आपको याद नहीं रहने वाला, मतलब नहीं याद रहता है 1000 बुक्स का मटेरियल. इट्स बेटर टू रीड लेस एंड रिमेंबर मोर देन रीड मोर एंड रिमेंबर लेस. सो रादर यू कीप योर मटेरियल लिमिटेड मटेरियल रखो, उसी को बार बार पढ़ो, उसी को याद करो. थिंग्स शुड बी इन योर हेड एंड नॉट ऑन द पेपर. एंड व्हेन आई say that, I also will be talking about making notes. उस पे भी मैं बात करूंगी. Again and again, I would again like to focus कि things should be in your head and not on the paper. दिमाग में चीज याद होनी चाहिए. पेपर पे आपको बस एग्जाम में लिखना है, उससे पहले you don't need to give too much apart from the practice part of it. But बहुत ज्यादा अगर आप notes making में या बहुत ज्यादा
कॉपी करने में ही आप टाइम लगा दोगे तो फिर दिमाग में कई बार नहीं जाती हैं चीजें. सो यू हैव टू फोकस कि मुझे याद रहे ये चीज. सो लिमिटेड मटेरियल में आप, जैसा हमने पहले देखा कि हमने सब्जेक्ट्स का हमने सिलेबस देख लिया था कि कौन से सिलेबस में क्या क्या है. हर एक सिलेबस के पॉइंट का आप एक सोर्स डिसाइड कर लो कि ये मैं किस सोर्स से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा, मतलब जो मेन सोर्सेज हैं दे आर वेरी लिमिटेड. हाँ, एक्स्ट्रा आप जितना मर्जी पढ़ना चाहो. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ. एंड दिस इज आफ्टर एनसीईआरटीज. एनसीईआरटीज तो पढ़नी ही पढ़नी है. एनसीईआरटीज में भी ओल्ड एनसीईआरटीज आर बेटर. इन सम सब्जेक्ट्स न्यू आर बेटर, वो आपको देखने पे ही पता चल जाएगा. हिस्ट्री एंड ऑल ओल्ड इज बेटर. तो ओल्ड एनसीईआरटी से आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, दैट विल मेक अ बेस. दैट इज वेर यू स्टार्ट. आपने सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली, आपका एक बेस बन गया. इकोनॉमिक्स है, सारी एनसीईआरटीज 12th तक की आपने पढ़ ली. उसके बाद यू लिमिट योर सोर्सेज टू 1 और मैक्सिमम 2 बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आप, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम है, इतनी सी बुक है. ऑल रेलिवेंट थिंग्स आर देयर इन दैट बुक. यू हैव टू रिमेंबर इट इन योर हेड. उसको आप 5-6 बार 10 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएंगी चीजें. सेकेंड पॉलिटी का लक्ष्मीकांत है, उसको आप बहुत थॉरली रिवाइज करके पढ़ लोगे, थिंग्स यू रिमेंबर. ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स का मैंने एंड सम ऑफ द थिंग्स यू कैन सी कि कौन सा आपके लिए बेटर सोर्स है. जरूरी नहीं कि बुक की हो. इकोनॉमिक्स के लिए सिंस यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, आई हैड, आई थिंक श्रीराम के नोट्स थे मेरे पास, और मैंने ऑनलाइन सर्च करके, देयर आर सो मेनी, आई मीन लाइक यू सर्च, यू सी वीडियोस, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. उतना शार्प सबका ब्रेन है. इफ यू ऑल आर इन हंसराज, योर ब्रेन्स आर सो शार्प कि आप कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहोगे, इतना मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, आप समझ लोगे वो कॉन्सेप्ट. So it's not limited कि मुझे पढ़ाया ही जाएगा या मुझे कोचिंग में बताया जाएगा. Your concept should be clear. What is that concept? रेपो रेट क्या है, ये सब चीजें आपको क्लियर होना चाहिए. Then you will be able to answer the question. तो this is, हाँ, so your material should be limited. एक या दो बुक्स हर सब्जेक्ट के लिए more than enough है. No need to go beyond that. What you can do is, हाँ, हिंदू न्यूज़पेपर में you have to study the Hindu. That is, वो तो एक important, सबसे important factor है ही. एंड सेकेंडली योजना में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं. दे आर गुड फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. एंड ऑल्दो आई वुड नॉट से कि प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट, बट मेंस के लिए वो अच्छी रहती है. पीपल रीड कॉम्पिटिटिव मैगजीन ऑल्सो, पीपल रीड कुरुक्षेत्र ऑल्सो, बट मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा. आई कांट कॉमेंट ऑन दैट. एंड तो हिंदू में आप जब पढ़ना शुरू करोगे, आपका मटेरियल लिमिटेड हो गया. आपको पता है कि हमने इस मटेरियल से हमने पढ़ना है ना. हाउ डू यू स्टार्ट रीडिंग, हाउ डू यू स्टार्ट स्टडिंग. जैसे न्यूज़पेपर बहुत लोग पूछते हैं, दे आस्क कि इसको कैसे पढ़ा जाए. So when you start reading the newspaper, you will find that initially it will take a lot of time to understand and to visualize that what is important from your exam point of view. The whole game is about strategy. You have to strategically prepare for the exam in the limited time, and you have to answer better in the exam. ये पूरा गेम ये है कि आप कैसे स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करोगे, प्रॉपर्ली कैसे आप प्रिपेयर करोगे, स्ट्रैटेजी कैसे आप बनाओगे. सो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, इनिशियली इट विल टेक यू 3 आवर्स. आप हर आर्टिकल, हर न्यूज आप पढ़ोगे कि हाँ शायद ये भी इंपॉर्टेंट है, शायद ये भी इंपॉर्टेंट है. अगेन एज आई सेड, सिलेबस शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू ऑल द टाइम. सूनर और लेटर you will realize कि अरे this news is not important, this is nowhere in my syllabus, this is not important, this one is more important, this is about Indo-China relations, I need to have this news, I need to remember this. Some of the editorials are really good in Hindu. Those will really help you for answers and for contemporary issues and for essay also. So what you can do, so that will take a little time, maybe a month for you to decide on how much time you require for reading. 1.5 to 2 hours is more than enough. More than 2 hours, then somehow time management aap nahi kar pa rahe utna better. So I think 1.5 to 2 hours. Initially you will take more time. Initially you will take 3.5 hours. But बाद में you will realize that this is important, this is not important. What you can do is you can, आप किसी भी तरह से segregate कर सकते हो. For example, I made files, paper 1, 2, 3, 4 की अलग-अलग files की. And some people what they do is कि न्यूज़पेपर से हर चीज कॉपी करने लग जाते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो इसको भी कॉपी. आधा टाइम उनका कॉपी करने में चला जाता है. हाफ द टाइम इज वेस्टेड इन मेकिंग नोट्स. आई थिंक दैट एनर्जी एंड एफर्ट उतना फ्रूटफुल नहीं होगा.
what you can do is if there is some article you really like कि हाँ ये मुझे नहीं याद रहेगा और ये मुझे रखना ही है, and initially maybe you can do it for all the articles that are important for your exam point of view. तो आप ये कर सकते हो कि आप वो कट करके आर्टिकल you can keep it in your paper one. Suppose it is a world history article, you can keep it in your paper one file. Or it is a अलग अलग सब्जेक्ट्स का एथिक्स का आर्टिकल लग रहा है आपको कि एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन मे बी you can keep it in your paper 4 फाइल. सो बाद में और उसी में आप पॉइंट्स बना लो 1 2 3 4, उसी में ही आप मार्क कर लोगे, तो इजी हो जाएगा, टाइम वेस्ट कम होगा. और उसी को बार बार याद करो, रिवाइज करो. कोई बिल पे कोई आर्टिकल है तो उसको आपने रख लिया, 1 2 3 को मार्क कर लिया, उसी को आपने रिवाइज उसी के साइड में जहां आपने रखा वहीं पे आप लिख लिया, किसी पे पेस्ट कर लिया पेपर पे, रादर देन कि पूरा आर्टिकल आप कॉपी करो, क्योंकि एज इट इज पूरा कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है. कट शॉर्ट करके करोगे तो मुझे तो हमेशा ये लगता रहता है कि अरे मैंने कोई पॉइंट मिस ना कर दिया, वो ओरिजिनल आर्टिकल कहाँ था. व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द ओरिजिनल आर्टिकल आफ्टर 2 months यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. बहुत मतलब इट इज इवन इफ यू कीप द न्यूज़पेपर्स इंटैक्ट तब भी आपको नहीं मिलेगा. सो आई थिंक वो हमें देखना जरूरी है कि किस चीज में हमारा टाइम ज्यादा यूटिलाइज हो पा रहा है और ज्यादा बेनिफिशियल है. और सेकेंडली नोट्स मेकिंग की भी अगर हम बात करें कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मेनी पीपल आस्क हाउ डू वी मेक नोट्स. अगेन आई वुड लाइक टू से दैट focus less on copying. Yes, if you are able to make notes in a very concise manner, very good, you should go for them, and you're able to remember from that one word that you're writing ki iska background kya tha, very good. If you're going to write the entire book again, there is no need of making notes. You can just go through the book again in your revision. तो ये हमें चीज ध्यान रखनी है कि हमें टाइम कैसे बचाना है. अब बना भी रहे हो नोट्स, बाद में आप दोबारा बुक पे जाके तैयारी कर रहे हो, सो देन there is no point of that. I always had the habit that I have to see the book before going into the exam. मुझे बुक देखनी ही देखनी, एक बार घुमानी है हाथ से, चाहे मतलब कुछ और ना देखना, but I have to just flip through it. So I decided कि मैं नोट्स उसी में ही पॉइंट्स बनाऊंगी और उसी में स्टार कर लो जो आपको याद नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या आप फ्लैप कर लो पेज, तो उसी में ही आप उसी को याद करो बार बार. And yes, you can practice by writing in the rough, you can practice by writing, but again making notes or just copying is no, it's time waste actually, it's not advisable. Again फिर notes making पे हमने बात कर ही ली है. Similarly, when you start reading, how do you read? Now there can be one approach of reading which I really liked was that दो तीन approaches हो सकती हैं. I'll share 2 approaches with you. You decide how you have to follow. First approach is that which I follow. कि आप शुरू में जब आप पढ़ना शुरू कर दो कोई भी बुक, आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, इनिशियली यू गिव इट टाइम. आप समय दो उसको, पढ़ो, समझो what the author is talking about, what era is being talked about. There is so much, all of us have Google on our mobiles, you can search about it, you can see pictures to get a clear idea. As we used to in younger days we used to tell like देखते हैं तो ज्यादा याद होता है. आप अगर कहीं किसी जगह गए हो, आपने देखा है या सुना है तो ज्यादा याद होता है. You can see videos on the same, you can see any movie which is related to the same. तो वो चीज आपको पहली गो में, you take your time, don't be in a hurry कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है, फिर रिवीजन भी करना है, फिर ये भी करना है. उस हरी में आप शुरू में मत रहिए. फर्स्ट टाइम दैट यू स्टडी शुड बी इन डिटेल, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड थिंग्स शुड बी गोइंग इन योर माइंड कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, पहले ये लड़ाई हुई. पर उतना भी रिलैक्स्ड नहीं पढ़ना है कि वो फिर आप किसी और ही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में चले जाओ, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू बी मतलब एक रिलैक्स्ड पेस पे, बट नॉट इन टू मच स्ट्रेस ऑफ sort of like finishing it soon. आराम से पढ़ो, याद करो चीजों को, give your time, the first go. So जब आप फर्स्ट बार पढ़ते हो तो आपको चीजें फिर कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपके क्लियर हो जाते हैं, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में आपको एक टाइमलाइन क्लियर हो जाती है. तो बहुत अच्छे से बहुत टाइम देके पढ़ो. सेकेंड, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू स्टडी. उसके बाद आपको 2 या 3 रिविजन्स करने हैं. तो फर्स्ट रिविजन जब आप करोगे तो आप इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लोगे जो आपको नहीं याद. अब एवरीवन हैज अ टैलेंट फॉर समथिंग. सम पीपल माइट
remember dates very easily, and some people might have difficulty with it. Yeah, some people might be good at history, or some people might be better at geography. So you need to, when you go for the first revision, after study I'm not counting in revision, that is the study part. After study, when you go for, and for study you can supplement it with your coaching or with whatever, you can just combine the sources and decide कि ये मेरा final, मैंने इससे पढ़ाई की है, ये सारे sources हैं, मैंने पढ़ा है. So when you start revising, तो आपको automatically when you start revising through the pages, you get to know that ये वाला concept मुझे समझ में आ गया, मुझे याद है. I don't need to like remember this again because I know. I just have to skim through it. And few concepts might take some more time. Those you can flag or those you can mark that these are the concepts. उसको फिर आपको दोबारा थोड़ा और time देना पड़ेगा in your first revision. But you can mark those concepts that these are the concepts that are taking me time to remember and that are hard for me in a way. So उसको आपने mark कर लिया first revision में, उसको और time भी दिया, पढ़ा भी दोबारा, concept clear भी किया. Then second revision आप करेंगे तो it will be a cakewalk for you when you have studied and done the first revision. And third revision, if you have time, you should do. So third revision, 3 revisions are more than enough. Studying once and 3 revisions, that are more than enough. But ये again it depends on the capability of a person. हो सकता है कि एक subject में आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको 5 revision भी करनी पड़े, या कोई ऐसा subject आपको समझ में आ गया है तो आपको 3 revisions ना करनी पड़े, 2 में काम चल जाएगा. But minimum 2 revisions you must do. I'm being very specific about the preparation part because I know that many of you are preparing, so some of you might be finding something that is of use from this. There are a few questions, I'll be answering them later. So this is one thing. Then secondly, again, note making I've talked about. Coaching we have talked about कि अगर coaching or self-study, you have to have a routine for yourself, and that routine you have to fix yourself only. अब कुछ लोग पूछते हैं कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए और कितना घंटा नहीं पढ़ना चाहिए, उसका कोई आंसर नहीं है. There is no answer कि how many hours you should study. Some people are very sharp. They get a concept in 5 minutes. Some people don't get it in 5 hours also. So that is totally subjective. But then again, you must be very, very, very clear that this is my schedule. This is how I'm going to follow it. And how answer writing, I will answer. Ye sare questions, I will be taking all the questions. Don't worry. I have all the time for you people only. I'll be taking each and every question. Again, where were we? You have to have a schedule for yourself, like how many hours can you dedicate. अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक मिनिमम आपको आवर्स बनाने पड़ेंगे कि इतना टाइम में प्रिपरेशन के लिए दूंगा या दूंगी. That need not be people saying कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए या 12 घंटे पढ़ना चाहिए. That need not be that. You have to have a set fixed amount, at least एक schedule होना चाहिए आपका अपने लिए कि इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है. I personally felt कि 12 घंटे से ज्यादा कोई, मतलब एटलीस्ट मैं तो नहीं पढ़ सकती. दिमाग बंद हो जाता है. Things stop going in your head when you sit for that long. You realize that 10th hour, 11th hour, nothing is going. You're just sitting in front of the book and nothing is going in your head. So what's the point of sitting there? So decide. But हाँ, एक minimum तो पढ़ना ही पड़ेगा. एक minimum आपको syllabus complete करने के लिए और revisions करने के लिए एक minimum amount of time चाहिए. Newspaper के लिए एक minimum amount of time चाहिए. तो वो आपको अपना schedule अपने अनुसार ही fix करना है. I would say कि बहुत leisurely नहीं रहे वो. You have to be very 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 clear about that कि बहुत leisurely नहीं रहे. आपका goal आपके सामने clear होना चाहिए that I have to sort of pass the exam, and that goal should be very clear, and you should be very very strict about your own schedule, and you have to follow it diligently. Nobody else should be checking कि अरे आप follow करो, आप खुद ही you should be very clear with it. And secondly, schedule के बारे में I would like to say is कि it's very important कि हम time waste कम करें. So sometimes social media and the kind of access we have to the internet or to the phones, sometimes it's a big distraction.
you will have to limit yourself. You will have to have, I won't say कि बिल्कुल eliminate कर दीजिए, because Google you'll be needing for your preparation, and some amount of relaxation also the mind needs. But see, you can't be just sitting there and Instagramming for 2 hours straight. No, that is something which is totally avoidable. You can avoid it. तो आप एक limit कर सकते हो. Timers भी लग जाते हैं. So you have to limit your social media and sort of like relax. अगर for some people it is a relaxation activity. You have to limit that. पर डे आप लिमिट करो, ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरली टाइम पे आप किए जाते हैं. सो दैट थिंग इज देयर. मेरे टाइम पे तो आई डेंट हैव अ स्मार्टफोन. इंटरनेट में लैपटॉप से यूज करती थी, एंड आई हैड दैट स्मॉल कीपैड फोन व्हिच आई ओनली यूज्ड टू यूज फॉर टॉकिंग एट होम या फ्रेंड से बात करने के लिए. मतलब कोई उसमें मल्टीमीडिया फैसिलिटी नहीं थी. दैट हेल्प मी अ लॉट. थोड़ा आपका सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस कम रहते हैं. तो that you can decide. Aajkal I don't know how easy or difficult it is to go off the social media completely. So that is up to you, but you have to limit it. It has to be limited. You can have like half an hour a day or 20 minutes a day. मतलब बहुत unnecessarily time waste आप उस पे नहीं कर सकते हो. एक तो distraction भी है, ऊपर से it does give you a little tension. अगर आप देखोगे अरे वो अच्छा prepare कर रहा है वो, तो I think that is totally avoidable. So that is one thing. तो time आपको अपना schedule manage करना है accordingly. And answer writing बहुत लोग पूछ रहे हैं. So answer writing, you can keep pouring the questions. मैं last में take up कर लूँगी. But yes, answer writing हमने discuss नहीं किया था, तो that we'll discuss. Answer writing is very simple. देखो, everything we have to see very logically. It's an exam, you have to clear it. It's nothing. जब आप जाते हो ना दिल्ली, या जब आप start करते हो civil services preparation, everybody says कि अरे ये तो बहुत difficult exam है, और हवा बना देते हैं कि बहुत ही तो क्लियर ही नहीं होता, बहुत पढ़ना है. So I think that is not the truth. It is a tough examination in terms of that it has a lot of stages, prelims hai, mains hai, interview hai, and it takes a long time, and consistent preparation is required. But then again, it is not something which you can't crack. That we have to understand. नॉर्मली जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं ना, उन पे ये बहुत प्रेशर होता है कि आपका तो फर्स्ट टाइम है. फर्स्ट टाइम तो ऐसी प्रैक्टिस होता है, और सेकंड या थर्ड में आप बेटर मूव कर लोगे. आई थिंक अगेन एज वी डिस्कस, फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट लेके चलो, एंड इट इज क्रैकेबल. आई हैड नेवर थॉट कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऑनेस्टली मतलब जो काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट वाज, आई नेवर थॉट कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में डबल डिजिट में रैंक आ जाएगा. माय रैंक वाज 59. इट वाज मतलब आई कुडंट बिलीव इट आल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ऐसा लगता है कि it is true, but I think in the hindsight I can just say कि yes, it is crackable. You can crack it if your preparation is very logical, and if you feel कि हाँ मेरा होगा ही होगा. You have to be positive also during your entire preparation. Stress free भी आपको रहना है. जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब मैंने स्केड्यूल की बात की थी, वन थिंग आई मिस्ड इट कि अपने स्केड्यूल में आप कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटीज भी रखिए. That relax you. It can be anything. It can be a hobby. It can be anything. I like traveling, so I used to go to CP every Sunday. That was my relaxation part. My Sunday half day I used to be in CP, roam around, meet my friends, everything, and then Monday to Saturday, Sunday mid noon tak the preparation. So that you can decide कि आपका क्या है. Some people like music, some people like movies, some people like painting, so that you can decide. But yes, some amount of time in a week, not every day, but in a week you have to keep for de-stressing also, because this is a very stressful exam, and it's a long duration that you have to prepare for. So ऐसा भी नहीं है कि 100-meter race है, it's more of a marathon. So you have to have some de-stressing activities at a regular level. It could be physical activity also, it could be sports, it could be anything. तो वो जरूर अपने schedule में आप रखेंगे. That is a mandatory non-compromisable thing. You have to keep it per week. Spend, I would just say कि spend a little lesser amount on social media of time, and give some time to your hobby per week. Any hobby. वैसे भी इसमें भी आपकी hobbies है. It's consider it as a part of preparation also. इसमें आपका डार्क में जब आपका personality test होगा, उसमें भी आपकी hobbies हैं. So why not? You should follow it throughout, and it will de-stress you also. Answer writing, when we talk about, एक तो prelims का तो we have already we can discuss. तो जब आप preparation शुरू करते हैं, many people ask कि कितने साल का preparation होना चाहिए या क्या होना चाहिए. I don't think I can limit it to an amount of preparation कि इतने ही साल का होना चाहिए. But yes, before
before prelims, you should give at least 1.5 to 2 months of exclusive prelims preparation, because we have to realize that in this exam, every preparation is different. आपका prelims का अलग तरह का preparation आपको चाहिए, objective type questions है. Mains you have to be very subjective about it. Answer writing की practice चाहिए, and interviews again, just about anything. So when you talk about the prelims preparation, आप prelims का 1.5-2 महीने पहले से आप exclusively prelims के लिए prepare करना शुरू कर सकते हो, जिसमें you can practice a few questions. What helped me a lot in prelims is that I joined a test series. उस time पे CL की test series थी, अब मुझे नहीं पता किसकी test series थी, और हमारे time पे CSAT was scoring. Now CSAT is not scoring, it is qualifying. So at that time CSAT was also scoring. So I joined this test series, and the best thing about the test series was that they used to conduct a test every Sunday or so, and every, I don't know which day, but every week they used to conduct a test. In that, the pattern was exactly like a prelims pattern. Like, you would go in the examination hall, you would deposit your bag, you would be seated on the seat, and then they would come and take your roll number and everything. So you got an idea of how much time you will be getting actually in the examination hall. And also you get a hang of the place. कई बार क्या रहता है, we know everything but we are not able to answer in the examination. So वो जो एक fear factor है, एक unknown factor है, पता नहीं क्या होगा examination hall में. आप घर में कितना मर्जी practice कर लो, but आप एक hall setup में नहीं practice कर पाते. So I think that helped me a lot. That fear of examination hall खत्म हो गया, and because I was doing it every week, तो वहाँ जाते थे, वही proper आप भर रहे हो अपना कितना time लग रहा है, how much time you actually get, and then बीच में break होता था जैसे paper में होता है 1-2 घंटे का, and then you get the paper 2. So that just gave me an idea how much time I'm going to get in the examination hall, and a hang of the place की examination hall का environment ऐसा होगा. You must be able to handle that environment of the examination hall, because it's not easy. You have to sort of, with a calm and cool mind, you have to be able to answer whatever you know. Nobody knows what is going to come in the question paper. Coming back to answer writing, prelims का हमने discuss कर लिया. Answer writing में what you need. See, pattern has changed. There are 10 marks each for every question now. For 10 marks, and time is very limited. Mind it, time is very limited in the examination hall. So for 10 marks, I won't suggest that you write a very flowery language or very, sort of beautified everything. Some people go with 4 different pens. They are underlining with red pen, green pen. इतना time ही नहीं है. आपको उतना time नहीं मिलेगा कि आप उसमें green, red और इससे आप underline कर रहे हो या बहुत flowery language लिख रहे हो. इतना नहीं मिलने वाला time. You have to attempt. Again, I emphasize and I repeat, you have to attempt 100% of the questions. You cannot afford to miss any question in your mains examination. आपको चाहे कम knowledge हो उसके बारे में, but you have to attempt it. You have to attempt it. Sorry, you have to attempt it. हर question आपको attempt करना है, because see, आप कितना ही अच्छा लिख लो एक question में, आपको 10 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे. So they would be like reducing. आपको 8 मिल सकता है, हो सकता है आपका आंसर बहुत अच्छा हो तो 8 से ज्यादा नहीं आपको मिल रहा हो. लेकिन in the other question, एक तो you are not attempting the question, you will get 0 marks, and if you are attempting the question, you might get 2 marks or 3 marks, even if you know a little less. So attempt all the questions, give your best shot, whatever you know from anywhere, whatever you know, you have to attempt the question. Attempting all the question is non-negotiable. You have to attempt all the questions. एक marks के लिए fight है, एक marks पे 50-50 ranks का difference आ जाता है. So you have to attempt all the questions. Answer writing कैसे करोगे आप? Simple, basic, जो आपको अभी तक पता भी है, उस पे focus करें. Introduction, main body and conclusion. Introduction can be a little background of whatever is being asked, leading up to the main body. Main body is your answer, basically what you are answering to the question. Main body can also end in a little negative points, कि इसके negative challenges क्या हैं या negative points क्या हैं. And then conclusion would be summing up everything and in a positive direction. I'm not saying कि बहुत ही flowery positive हो, but it should be in a positive direction, because UPSC is looking for officers, for people who are into solutions and not into the problems much.
So they are looking forward for solutions from you. तो वो आपके आंसर में दिखना चाहिए कि you have a positive approach and you are going towards a positive solution for the same. तो इंट्रोडक्शन में आपने एक बैकग्राउंड लिख दिया, कोई कोट वोट कोई लिखने की जरूरत नहीं है. इंट्रोडक्शन में आपने एक बैकग्राउंड लिख दिया कि ये कैसे हुआ, ये लीडिंग टू द आंसर. योर आंसर इज इन द मेन बॉडी में ही एंड में आपके चैलेंजेस आ जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे, और बाद में जो कंक्लूजन है दैट विल बी समिंग अप एवरीथिंग एंड पॉजिटिव डाय. और इट कुड बी अ सिंपल लाइन की वे फॉरवर्ड क्या रहेगा. तो ये आपका आंसर राइटिंग है. इसी में ही now to attract the attention of the examiner, you can underline with the same pen, because again there will be no time limited रहता है examination hall में. So with the same pen you underline whatever points you feel important or whatever points you feel that you need to attract the attention of the examiner to, and with the same pen you can underline, or you can write in points, or you can write in bullets, or you can make a flow chart. That is up to you, but this is how you attempt. Geography questions में you can make a map, तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो. तो उसमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. बहुत लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं आंसर राइटिंग को लेकर के, कैसी होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू answer the question, you have to write what you know, basically, as simple as that. And that is about that. And essay, so essay mein, yes, essay is a bigger question, it has a lot more weightage. So essay, yes, you will have to sort of give more time to, and essay you can use some quotes and you can use some stories in your essay. जब essay का पेपर आप अटेम्प्ट करने जाते हो, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सिंपल चीजें जो आ रही है मेरे दिमाग में मैं बता रही हूँ, जो मुझे लगता है सबको पता होनी चाहिए, एंड आई एम जस्ट कीपिंग इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल. जब आप essay अटेम्प्ट करने जाते हो, योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हिच essay डू यू चूज टू राइट. आपके 2 essay हो गए हैं, उसमें से आपको 5-6 ऑप्शंस आते हैं हर essay के लिए, उसमें से आपको चूज करना है आप कौन सा essay लिखोगे. प्लीज चूज सच एन essay दैट यू नो अबाउट, नॉट कि ये अट्रैक्टिव लग रहा है, गांधीयन फिलोसफी पे है, यू हैव नॉट रेड अबाउट इट, यू डोंट नो अबाउट इट, आप कैसे लिख दोगे 10 पेज उस पे, नहीं लिख पाओगे. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट हाँ इसमें मुझे एज है या इसके मुझे नॉलेज है, तो ये ऐसे मैं चूज करूंगी. सो that is important. What essay do you choose? In my time there were many essays. Science and technology का एक essay था जो 90% लोगों ने वही essay लिखा था. I felt कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकती थी. I did not have an edge over the other aspirants for that essay, क्योंकि science and technology में मैं उतना अच्छा नहीं जानती थी जितना और लोगों को पता होगा. I had not read much about it, so I was more attracted towards another topic that I felt कि मैं इसमें कुछ अच्छा लिख सकती हूँ. That was gross national happiness and GDP का topic था. I personally felt also for the same, so I wrote an essay on that. And you can add quotes in your essay, you can add stories. Basic essence होना चाहिए कि उसमें लय होनी चाहिए. Essay should be continuous. It should not be कि first paragraph में कोई और बात हो रही है, second paragraph में कोई और बात हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए. It should be continuous. So when you start writing the essay, आप पहले ही brainstorm कर लो. At the end of your answer sheet, maybe you can start writing points जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं. Give 20 minutes to brainstorming. Give 20, first half an hour, first 20 minutes you have to give कि आप brainstorm करो, आप एक पैरास बनाओ कि कौन सा point में किस पैरा में लिखने वाली हो. एक broad, not very detailed. And एक थोड़ा structure बनाओ essay का. You have to give 20 minutes, half an hour to that. Even if you start your essay half an hour late because of this, I don't think that will waste your time, because you will know कि मुझे इस paragraph के बाद ये इस पे आना है और फिर इस पे आना है. Sometimes what you do is when you start writing immediately, बीच में फिर आपको एक point याद आता है और फिर आप सोचते हो अरे अब मैं कहाँ डालूं essay में, कुछ और ही चल रहा है. And when you start adding the point, the entire tone of the essay changes and the entire structure is disturbed. So basically it should be continuous. It should attract the interest of the examiner, because essay, yes, it takes some practice. Writing essay की आप पहले practice कर सकते हो. बहुत सारी test series online भी available है, आप join भी कर सकते हो, आप online questions लेके घर पे भी practice कर सकते हो. So that is up to you, but ultimately यही है कि उसमें continuous lay होनी चाहिए. I got good marks in my essay. अच्छे आ गए थे number, because यही मतलब I told you ना, my essay was different from all the other
many other aspirants, and बाकी सबने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लिखा था. कंपटीशन भी उसमें फिर ज्यादा हो गया, तो उस ऐसे में तो नंबर फिर कम आए थे लोगों के. And I knew about the topic and I wanted to write about the topic, तो फिर मैंने उसका लिखा था. And then you have English और हिंदी के mandatory जो papers रहते हैं qualifying, so उसमें many people they don't read Hindi. So I saw a few seniors of mine जिनका जो preparation में seniors थे, कि उनका बाकी सब में बहुत अच्छा उन्होंने attempt किया, mains में सारे subject में and everything, but they could not qualify the Hindi exam. So that is why the entire the attempt was wasted. So be very careful about that. You have to qualify it. 1/3 आपको number लेने हैं, तो उतना आप हिंदी में आप पढ़ के जाइए. बिना पढ़े ऐसे बहुत confident, मतलब you can't be overconfident in this examination ever. You have to prepare and go. You cannot like not prepare and go. So you prepare for that also. आप कोई भी basic व्याकरण की grammar की book हिंदी की उठा सकते हो. उसका भी syllabus है. Syllabus देखो क्या क्या पूछा है. Unseen passages, मतलब very simple, not very difficult though, but still you know you should have in hand. मुहावरे वगैरह रहते हैं, कई बार भूल जाते हैं, हम पहले पढ़े होते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ के जाना better रहता है. That's about answer writing. And what else? Book list, test series, timetable we've talked about, optional strategy, test series again we've talked about. It's better, I mean you can join some test series, उससे थोड़ा आपको idea लग जाता है. You get to know, you get a hang of things, you get practice. And revision we've already talked about. Study and then at least 3 revisions, and then if required for a particular subject, more revisions. Optional again, you have to decide books कहाँ से पढ़ना है. Optional में जो paper 1 रहता है, उसमें it's more of a philosophical sort of thinkers and everything. Normally geography में तो यही था. So maybe you can that you'll have to sort of decide from where you're going to study. I did take coaching for optional, so I studied from my coaching notes and few other books. And also for paper 2 is more contemporary in all the optionals. You can decide कि इस question को अगर मैं answer करने वाला हूँ ये वाली, तो I will quote this thinker. In your optional you can decide that. For example, कोई भी एक topic है, उस पे एक thinker ने कुछ बोला हुआ है, तो आप decide करो ये question आएगा, चाहे thinker के बारे में पूछा हो या नहीं पूछा हो, I will start with this thinker, so that you can, when you are preparing, you can decide and accordingly you can revise. And medium again, any medium you want to choose. याद कैसे करें? याद कैसे करें is again, you have to revise it again and again, and all those ancient sources, if you see it, if you feel it, that's more, if you are very clear about your goal, you'll remember. I had no plan B, so there was no plan B for me when I started preparing. Yes, I did do graduation in biotechnology, but when I was preparing, I was only thinking about preparing. I was not doing anything else. So there was no plan B कि अगर ये नहीं हुआ. I had never let that thought cross in my mind कि अगर ये नहीं हुआ, because sometimes those kind of thoughts sort of hamper your preparation. So कि अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे. That's my opinion. You can have a plan B. That's your choice. Retrospectively I feel कि अगर नहीं होता तो maybe I would have had a plan B, but I cleared in the first attempt, तो मुझे उतना नहीं लग रहा है. But yes, you can. That is up to you. However you decide. And step by step you have to study. Step by step you have to be very strategic in your preparation. You have to be very very specific. It's an exam, you have to clear it. It's not something which is not crackable. You can crack it. You have to have confidence in yourself. All of you being in Hansraj, I am sure must have been very good in studies. So definitely I think you will be able to. Just that it's a game of perseverance and constant effort and consistency. So that has to be looked into. And again, my journey was a very short one at UPSC preparation per se, because I cleared in the first attempt. But yes, this can be a long journey, and it can be very taxing for many of us. So we have to make it more interesting for ourselves, and we have to keep the motivation and the zeal alive. Now there are a few questions that people have put up. Do I directly start answering the questions from here, or are people going to ask
questions first. Ma'am, we So, have prepared some questions, so shall I please, ask? आप पूछ लो, then I'll answer their questions. Okay, Can okay. I take a minute? Yeah, sure, sure. Yes, Simran. Yes, ma'am. Yeah. So my first question is there, ma'am, that many of the people here hail from the science background as you. So how do you dealt with the switch from science to arts? Um, See, I think science background is an advantage because your mind becomes more logical in the approach. So for science background students, I would only say कि ये आपके लिए advantage ही है. It's not because हमें पहले से ही पढ़ने की आदत है बहुत ज़्यादा. Every during non-medical and medical preparation you study a lot. So it's not that difficult for you. And yes, there is a switch. You do switch to art subjects, but that's an interesting switch. Optional, you can choose such an optional that you feel is more, you're more comfortable with being from a science background. Yeah, more technical optional because science background वाले uh, उतना मतलब कहानी लिखने में they are a little not very comfortable. They are like very simple answers, tick tick tick, this basic, बहुत ही point to point. So ठीक है, it's equally good for all the background students. Science background more logical आप रहते हैं तो more logical approach. Nothing to say anything against any other background, but I am from science background, so I can say only about myself. I felt that we are more logical in approach towards things, and पढ़ने की आदत भी ज़्यादा रहती है. So I think it's not a very difficult switch. Yes, you should know okay, what you are going into. Yes, there will be art subjects that you will have to study, and you will have to, you might feel also कि देखो arts वालों ने तो ये पहले से पढ़ा हुआ है तो ये पहले से उनको advantage होगा, but nothing doing, we don't have to, we have to see about ourselves. हमने नहीं पढ़ा हुआ तो हो सकता है हमें ज़्यादा time लगे पढ़ने में, कोई बात नहीं, we'll give that time, है ना. तो आई थिंक कोई उसमें ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है कि आर्ट्स बैकग्राउंड एज एन एडवांटेज. ऐसा नहीं है. एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. Yes, they might have already studied those subjects, but you also have your own advantages. Okay, ma'am. So my next question is, like due to the pandemic, we have to choose between online or offline coaching. So what is your take on online coaching? I think in my long address, I've already mentioned about my take on coaching in general. Whether it is online or offline, that's a different thing. Coaching in general, आपको self-study is more important. Coaching just gives you a direction. So whether you want to take it or you don't want to take it is a personal choice. Many people clear without coaching. Many people clear with coaching. I personally felt कि मेरा routine coaching लगाने से क्या हो रहा था, routine set हो जा रहा था basically. I could work in a disciplined environment कि every day I'm going out for 2 hours and getting ready. So that brought more discipline in me. So that is why I had joined, and I did not join any particular coaching. I kept on, when I finished one, I joined another because it's a long preparation. So when I finished another, I joined another. So उस type का था. So I think it just helped me make a routine. So that is your decision. Online, so it's more, it's better now. So much material is available online now that everything is available at the click of a button. So, but then again, you have to choose. You don't have that much time to read thousands of books. You have to choose for yourself what and how much you're going to read.
Yeah. So my next question is, ma'am, for the personal interview round, what activities one should do on a regular basis with studies to keep one's personality up to the mark? I'm so sorry I missed out on the interview preparation altogether because I wanted to finish it soon because I'd already gotten late. Interview में क्या है? I'll just talk about the interview. I think interview, a major part of your interview is covered from your detailed application form, what you fill in the form. I think 70% questions of your interview will be from them, from your form. Yes, if your form is not very interesting or it is, not very sort of rich, then they might go to other questions or current affairs or whatever. And then it depends on the examiner also, what background from, on the interviewer also, what background he comes from and what he wants to ask. तो आपका क्या रहता है कि मेन से पहले आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म एक भरना होता है. बी वेरी केयरफुल विद फिलिंग दैट फॉर्म. उसमें each and every word of that form is important. Whatever you fill, each and every word, birthplace, this, home state, this, school, like mine was a convent school, so they can ask about ki aapka kab establish hua, what is the philosophy behind it, and then Mother Teresa. It can just backtrack ki if you were the examiner, you were the interviewer, so what would you ask the person who would be coming with such a form. So every word of your form is important. And then current affairs and other thing they can ask from your subject also. बाकी तो कहीं से भी पूछ सकते हैं. For your interview preparation, till the time of mains, you don't need to prepare anything extra. Personality, yes, you have to be confident. See, that is non-negotiable. You have to be confident. Think कि आपको आगे ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर में what are they expecting? They are expecting confidence. They are expecting, sort of being truthful. तो आपका पहला तो ये है कि आप जब तक मेंस के लिए तो सेम प्रिपरेशन है. आफ्टर मेंस यू कैन मे बी स्विच टू वन मोर न्यूज़पेपर. आई डिड Indian Express after the mains examination for interview and a little bit of Times of India, but Hindu was the main. And again, I prepared my detailed application form in too much detail. Every word is important. Wherever you belong to, what are your hobbies. If you suppose, they'll be asking about your achievements. So if you're writing about debating, so debating ho gaya, reading likh rahe ho, they can ask you about books, anything they can ask you about. फॉर्म में मेरे तो आई थिंक 70% क्वेश्चंस वर फ्रॉम द फॉर्म. अच्छा, आई एम अ वुमन, तो मुझे ये भी सोचना है कि अगर एक वुमन कैंडिडेट आ रहा है तो आप वुमेन एम्पावरमेंट का तो क्वेश्चन आ ही सकता है, आपको पूछा ही जा सकता है. तो वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आ सकता है. तो उस तरह से आप अपना बैकग्राउंड, आपके अलग अलग लोगों का अलग अलग बैकग्राउंड है, तो अपने बैकग्राउंड के अनुसार आपको सोचना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और जो भी आप फॉर्म में लिख रहे हो, ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट. उसमें से क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है. यू हैव टू मान के चलो और उसकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओ. फॉर एग्जाम्पल मेरा एथलेटिक्स में था, सो दे आस्क्ड मी अबाउट एथलेटिक्स. I had studied from, as you all know, that from Thapar University, Patiala. So my opening question was from Patiala only. My hobby was travel. तो travel का उन्होंने पूछा था question कि पटियाला में कौन सी टूरिस्ट की जगह. Imagine, they linked travel my hobby and then they linked Patiala and then they asked. And I told them a place, so maybe I think the interviewer was also from Patiala, so he didn't know that place. So he said, "Iska rasta kahan se hai?" So I told him the way also. Be confident. I mean, anything can be asked. Then athletics ka they asked कि India में क्या future है. Then women empowerment ka they had asked. Movies I had not written in my form, but I don't know how they got to know that I'm interested in movies also. तो movies का भी उन्होंने एक question पूछा था. And NCC, I was in NCC, so NCC से they had asked a question. So make your form so rich कि form से ही question पूछ ले 70%. आप उसकी तैयारी करके जाओ, so you are sorted for the interview. And yes, current affairs से definitely they can ask. So तो है ही है. And then few interviewers they would ask about a particular foreign relations को कई पूछते हैं interviewers बहुत ज़्यादा. So I started my interview preparation very late. I started preparing from my interview when my mains result came. Imagine. But luckily my interview was in the middle. Like for example, the mains result had come around 12th March and interviews were starting from 1st April. My interview was, and they were like from 1st April to
2nd, 3rd of June, and my interview was on 1st May. So suppose your interview is on 1st May, so 1st May is Labor Day. So they can ask you about Labor Day. तो वो आपको दिमाग चलाना है कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है. Those kind of, you have to be just be prepared and be confident. Be confident. Walk there confidently. Whatever you're wearing on your interview, suppose as females we wear colors, so you have to be उतने लेवल तक आपको सोचना है कि आप इंटरव्यू में कौन से कलर की साड़ी पहन के जा रहे हो, उस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने ग्रीन क्यों पहना है. Then you would say, नहीं, this is my favorite color. Why is it green your favorite color? So you have to justify. तो हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Every kind of question can be asked. And personality, you have to be confident. If you don't know an answer, अब अपने फॉर्म से तो आप मना नहीं कर सकते हो. आप ही के फॉर्म से पूछ रहे हैं तो you have to be confidently answer. उसकी आप तैयारी भी करके जाओगे. करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता, तो you don't bluff. Simply say, sir, I have not read about it. Yeah, I don't know this. So they are looking for truthful people also. ऐसा नहीं कि आप bluff कर रहे हो तो पकड़े जाओगे. Definitely, if you are bluffing any answer, मुझे आता नहीं है लेकिन मैं I will try to answer, वो नहीं करना. If you know, you tell. If you don't know, you don't tell. You simply say, I have not read about it. Sorry, I have not read about it. They'll move to another question. गलत बोलोगे, फिर वो कुछ पूछेंगे, फिर आप कुछ बोलोगे, then the interview gets a little, murky. So I think you have to be confident, and you have to prepare everything very well, at least about yourself. And current affairs के लिए we talked about the newspapers. And secondly, DAF जो आप भरने जा रहे हो ना, detailed application form, वो बहुत ध्यान से भरना है. Whatever you, for example, आपने सर्विस प्रेफरेंस है तो IAS ऊपर भरा है, IFS सेकंड भरा है, थर्ड है, तो वो प्रेफरेंस में भी पूछ सकते हैं कि आपने सबसे ऊपर IPS भरा है तो IPS क्यों भरा. तो दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड. सो अपना दिमाग उस तरह से चलाइए, एंड यू कैन जॉइन सम मॉक इंटरव्यूज. उसमें भी आपको आइडिया लग जाता है कि आप कैसे बोल रहे हो. उसको रिकॉर्ड कराओ. व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर योर इंटरव्यू, तो आप डेफिनेटली एक कैमरा रखो साइड में, आप रिकॉर्ड करो, आप सुनो अपने आप को कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कहीं अटक रहा हूँ, या मैं sometimes you stammer a lot, so you have to work on those things. And I think it's a very good experience, the interview. Thank you, ma'am. I believe you have covered all the questions, and we can take a question or two from the audience. So many questions in the audience. I don't know what questions I should take and what. Is that true that a candidate are given additional 20 marks who reaches interview level and very? No. This is not true. Candidate does not get any additional marks if he reaches first attempt में interview में पहुंचता है तो additional marks नहीं मिलते हैं. Prashant, it's not true. These are all myths. Does college we study in, or the course we pursue in a college give an extra edge over students? As I am from tier 3 college, this question came to my mind. See, which college you pursue, I don't think so. That gives an extra edge. If you're confident enough, तो कोई भी आप college में हो, ऐसा नहीं कि DU से हैं या JNU से हैं तो IIT से हैं तो अलग कोई उसमें अलग मार्क्स हैं, अलग एडवांटेज है, ऐसा कुछ नहीं है. You have to be confident. Even if you have scored very less marks in your 10th or 12th, जो आप लिखते हो marks, you have to confidently justify it. नहीं पढ़ पाया, तो be confident about it. You have to just chill रहना है, बहुत ज़्यादा stress नहीं लेना है, confidently answer करना है. I am from Raja Talab. My question is, जैसे हम जानते हैं कि बहुत लोग UPSC preparation कर रहे हैं. Raja Talab was my first तहसील as SDM. So बहुत UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ का ही होता है. वो में क्या क्या होता है जो इनको अलग बनाता है. देखो, औरों से जो आपको अलग बनाएगा वो आपका कॉन्फिडेंस ही है, और कोई चीज अलग नहीं बनेगी. यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड. देयर इज नो एक्सेप्शन टू हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. 8 लाख लोग पेपर देते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं आपके 25,000 लोग, मेंस क्लियर करते हैं 3,000 लोग, और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन लिस्ट में 1100, 1200, 1500 सीट के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन होता है. एंड उसमें से भी सर्विस में IAS पर से अगर मैं कहूँ तो 180 पीपल. इन माय बैच वी वर 183. आउट ऑफ 8 लाख ओनली 183 आर बिकमिंग IAS. फिर आप देखोगे कि अदर सर्विसेज भी हैं, IPS है, IRS है, बाकी सर्विसेज में भी, मतलब टोटल 1100 to 1500 रैंक्स यू हैव आउट ऑफ 8 लाख. तो आपको डेफिनेटली देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट. दैट शुड बी योर हार्ड वर्क एंड दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस. बिना हार्ड वर्क की कॉन्फिडेंस कोई काम का नहीं है. आपको पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको आता ही नहीं है, तो फिर देयर इज नो पॉइंट. दोनों चीजें होनी चाहिए, हार्ड वर्क भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और बिना स्ट्रेस लिए आपको पढ़ना है. स्ट्रेस नहीं लेना ज्यादा.
I'm how to integrate current affairs with static part efficiently and remember them. You'll get to know this as you read. कि कौन सा जैसे आप इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स में आपने कोई स्टैटिक पार्ट पढ़ा है तो करंट उसमें जो भी इवेंट होगा उसमें आपको ऐड करके उसको आंसर करना है. आई थिंक you'll get to know as and when you prepare you'll get to know. What level of English do we need? As I've studied in Hindi medium up to 12th. अगर आप हिंदी मीडियम लेना चाहो एग्जाम में आप ले सकते हो. सिर्फ एक इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होगा आपका इसमें मेंस में इंग्लिश का क्वालिफाइंग होगा जिसमें आपको 1/3 स्कोर करना है. उतना आपको आना चाहिए बेसिक. Right time to prepare for UPSC. Is it important to have a backup plan? Again, there's no right time to prepare for UPSC. I did not have a backup plan. You can plan for yourself, but ऐसा नहीं हो कि आपके मन में ये हो कि क्लियर नहीं हुआ तो ये तो है ही. अगर ये वाला एटीट्यूड रहेगा तो क्लियर नहीं कर पाओगे. आपका मन में रहना चाहिए हमें क्लियर ही करना है. बैकअप रखो भले. What was your optional? Geography was my optional. How to do writing practice? We have already discussed. How to can we manage between job and UPSC? Yes, you can manage. You will have to divide your time accordingly. English, please. Oh, sorry. I was told that you have to be bilingual. Sorry, he's writing English, please. How did you manage your stress? Again, I told you that de-stressing activities you have to keep in your schedule. Syllabus, हाँ, तो ma'am, can you please explain the preparation part in points like syllabus, books, study? I think that I have already told what to study, what not to. I think we've already talked about it. How to start with NCERT, like take one subject, read book for all classes, then switch to one. हाँ, subject-wise would be a better option because that would give you more clarity. तो सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ो उसको. ज्योग्राफी उठा लो पहले या हिस्ट्री उठा लो. सब्जेक्ट वाइज आप पढ़िए अपना पूरा मटेरियल एनसीईआरटी प्लस द अदर बुक्स. Ma'am, were you from science or humanities? Science. Please tell something about your interview. हाँ, I've already talked about it. Interview का मैं भूल गई थी बताना, but we talked about it. Started watching videos on YouTube to get an idea on maps, but not able to retain information and markings for a long time. How do I solve the issue? Practice. Map ले आओ blank. क्वेश्चंस लो, उस पे मार्क करना स्टार्ट करो, देखो आपका सही है नहीं है. लॉजिकल लगाओ अप्रोच. बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर इन हंसराज, साइंस बैकग्राउंड. should I leave Hansraj to pursue BTech or continue in Hansraj? Does it affect my UPSC preparation? No, nothing will affect your UPSC preparation. You just have to be a graduate in any of the subject. It could be science, arts, whatever. Graduation बस चाहिए यूपीएससी के लिए. ग्रेजुएट आप किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं. व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ सिविल सर्वेंट? Both during preparation, after selection. During preparation, I think I've already talked about that you should have a positive approach. You should work towards solutions and not problems. There are problems everywhere. If there were solutions, they won't be needing civil servants. There are problems that you have to solve. And after selection, I think very much the same. You should have a positive approach towards life. Does exam writing center makes any difference? Yes. This is a very good question. I was wanting to talk about it, but sorry I missed. Exam writing center can make a lot of difference. When I was talking about my journey, so I prepared from Delhi, as we already talked about, but I gave all my exams in Chandigarh, which is my home place, because I felt कि मैं घर पे ज़्यादा comfortably मैं पेपर दे पाऊंगी. And distances in Chandigarh are shorter. दिल्ली में जब आप कोई सेंटर भरते हो तो आपको मॉर्निंग में मतलब उस दिन उस सेंटर पे बहुत रश रहता है, रोड बोर्ड्स एंड एवरीथिंग. मॉर्निंग में 1.5 घंटा आपको सेंटर पहुंचने में लगता है. आधे लोगों की एनर्जी उसे में खत्म हो जाती है. मैं एडवोकेट नहीं कर रही. अब बहुत लोग दिल्ली से भी हैं. आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आपको दिल्ली भरना चाहिए या आपको कहीं और भरना चाहिए. आप जहाँ कंफर्टेबल हो. आई वाज मोर कंफर्टेबल इन गिविंग द एग्जाम एट माय होम. उसमें दो पॉइंट्स थे. एक तो ये था कि वो दिल्ली वाला जो प्रेपरेशन वाला जो रश रहता है ना, वो उससे आई गॉट अ ब्रेक, बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोज पर्सन्स हु likes to discuss the question paper. I do not like to discuss the question paper after giving the exam. So many of them would just come out of the exam center and start discussing. अरे ये क्या है, अरे इसका क्या लिखा, इसका क्या लिखा. I do not like that at all. और आपके इतने एग्जाम्स होंगे कि आप अगर यही डिस्कस करते रहोगे पिछले पेपर में क्या हुआ और आपको पता चला अरे ये तो मैंने गलत लिख दिया, and then आप मूड स्पॉइल करोगे. फिर आगे आपका you have to write I think around
8 and 10 and 11 and 13 exams you have to write in a span of 10 days. मतलब it's no joke, huh? So you cannot be worrying about कि पिछले एग्जाम में क्या लिखा. तो मुझे उस रश से भी थोड़ा बचना था. I didn't like that at all. So one was that, and secondly, distances in Chandigarh, everything is like 15-20 minutes. So distance and overall peace and calm of the city, because it was my home city in a way. So because all my education is from Chandigarh, so I was more comfortable. So I think मेरे लिए, you know, that was another factor जो मुझे comfortably I could give the exam. Now many people are from Delhi, they would feel कि हाँ Delhi में they have no issue in giving the exam. Perfectly fine, whatever suits you. Whatever suits you. Some people feel Delhi कि नहीं Delhi में ही देने से नंबर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आप कहीं भी दे सकते हो. आपको जहाँ comfortable है आप वहाँ पे दो. जहाँ भी आपको comfortable है. और interview in any case Delhi में ही होता है, तो interview आपको Delhi में ही देना पड़ेगा. Okay. Hindu is sufficient for current affairs. Few material you can get online also. Can we use mixture of Hindi and English in personality test? No, you decide a medium. It's either Hindi or English. Your braveness or bright, bringing to light the mining mafia. Thank you so much. How do you feel so confident about yourself? Onward journey. It's an onward journey. The journey is, as I told you when I joined this session, clearing the exam is the easiest part that I feel now is. Do we need to study only those topics which are mentioned in syllabus? Nothing beyond? Yes. 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 Limit yourself to those topics, nothing beyond the syllabus. Suggest some books. Books I will suggest, I'll share a book list separately. Is it true that attempting exams in certain centers fetch you more marks? I've already said, no, it is not true. पेपर में क्या लिख रहे हो वो उससे मैटर करेगा कितने नंबर आएंगे. कौन से सेंटर पे दिया है पेपर उससे नहीं मैटर करेगा. Oh my god, there are so many questions. I believe you have covered most of them. I think have you covered everything, Simran? Yes, ma'am. Sure, matlab they're just pouring in. Oh my god. Some questions are repeating. So I believe can you just quickly scan through this if anything I missed out of these questions? Sure. एक बार scan कर लो if I don't want to miss any question. Tentatively, how long the session will be? I don't know, around 1 hour. हो गए. Yeah, I believe you have covered most of the questions, ma'am. Okay. How to remember for a longer time, to read it again and again, and you can watch any videos. Some people are writing codes. Job and UPSC, I think same questions are repeating. Yeah. I think any other questions, if you have, you can always pour in your questions on my Instagram page. I do frequently look into that page. So I will answer all your questions. In interview, there was an interview related question. Missed it. Now I'm stressed about what I will write in my DAF. Should I start developing a hobby or not? If you have, you write now. Whatever, you can write anything. If you don't have, then you write whatever you feel is you're better at. जैसे हम जानते हैं कि बहुत अच्छा ठीक है. I think same questions are repeating. Yes. When is DAF to be filled? It's somewhere between your when you clear your prelims and when you are yet to write your mains. Before mains. How to decode UPSC CSE syllabus? It's all decoded. It's very simple. मतलब बहुत ही specific है syllabus. कुछ decode करने की जरूरत नहीं है उसमें. Very cut to cut. Anunya, met your batchmate Anunya Jha, sir, posted in Mathura. He's not my batchmate. He's 2015 batch. I'm 14. Will program law. I have many batchmates who had law and scored pretty good. So law is a
if you're from a law background. So I think law would be a good option. I think I've covered all the question. If there is any other question, people can ask directly also. Or we will send you on Instagram. If you have if any other questions are there, few people have joined, they can ask 1 or 2 questions I can take, and then we can wrap up the session. Anybody? Peer circle is very important during your preparation. You have to have a very dedicated circle. जिसमें आप मतलब not necessarily you should be having a peer circle, but they shouldn't be like such कि वो आप कुछ और बोल रहे हो और वो कुछ और बोल रहे हैं. मतलब for example, suppose all of your peers are working and you are preparing, so उनका एक अलग set of mind होगा, आपका एक अलग set of mind होगा. So like-minded peers would be better. And mentally motivated, again we've talked about it. I think we'll wrap up today's session. It's already too late. काफी समय हो गया. So thank you everybody. Thank you so much for being so attentive and for bearing with me throughout the session. And I kept it as short as I could, and very briefly I tried to touch all the topics. If still you feel that I've left out any topic, or if some specific questions are left that you could not answer, you could not ask here, you can definitely on my Instagram page you can put the questions. I'll try to answer them. And thank you so much. It was a pleasure interacting with all of you. All the very best to everybody preparing for the civil services. I hope to see a lot of officers out of you. Thank you so much. Thank you, ma'am. I would now like to take a moment to express the vote of thanks on behalf of Mr. Society. I extend my humble gratitude to our honorable speaker of the session, Ms. Isha Duhan ma'am, to take out the time from her busy schedule to grace the juncture. It was an erudite session with so many news and engrossing learnings. It gave so deep insights into the topic and also revealed some interesting facts. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. A special thanks to our esteemed Principal Dr. Rama ma'am and convener Mahendra Prajapati sir for providing immense support to make the session successful. A special thanks to our participants who chose to go live with us. Once again, thanks to the hard work that all the team members have done to make this session possible. An end is only a beginning in disguise. With this note, I would like to announce the closure of this. Simran, you're muted. Thank you everyone for giving your time and marking your presence. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.